Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me khurramshahzadahamdofficiaL and you are watching YouTube channel khurramshahzadahamdofficiaL. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसीक्वेंसेस में से सेकंड का सीक्वेंस which is time dilation. So time dilation we can explain it as the time slow down at very high speed. Thus is it called time dilation. We can also say that let we have a body as I shown it's a marker, but we assume that it's moving with a very high speed which is comparable to speed of light. Then the light of that marker becomes slow down and this phenomena is called time dilation. So now if we move toward the proof, so for the proof we can imagine two bodies or two frame of reference, so S and S dash frame of reference, so and we also imagine that S dash is moving with a constant velocity along positive x direction. Now what is positive x direction? So we can imagine it that we have a coordinate axis. This is x direction and this is y axis. So on right side of coordinate axis this side is said to be positive and the left side of x-axis will be considered as a negative side. Similarly for y, the above or the upper side is be positive and the lower side will be negative. So the x s dash prime of reference is moving in that direction which I showed. So now we are going onward. So let there is a mirror as light source and detector attached to a s dash frame of reference. So as I shown in this diagram, this is s frame of reference and this is s dash frame of reference. और आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे मैंने एक लाइट सोर्स लिया है, एक डिटेक्टर लिया है और एक लिमिट मिरर लिया है और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो L0 है. सो आगे हम यही कहेंगे कि सपोज वी हैव टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश. एक ऑब्जर्वर जो है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सेंटर में है और दूसरा ऑब्जर्वर ओ डैश which is present at the S dash frame of reference center. So respectively they will measure the time t0 and t when they have two identical clocks. मतलब हमारे पास जो है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हो दोनों का के लिए हमारे पास दो ऑब्जर्वर है ओ एंड ओ डैश, दोनों के साथ जो है एक तरह के ही क्लॉक से जिससे वो टाइम को मेजर करेंगे और वो टाइम होगा t0 और t. अब जो ये है हम इसको इस तरह कंसिडर करेंगे कि लाइट सोर्स से एक लाइट जो है वो इमिट होगी जाके एक मिरर पे स्ट्राइक करेंगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस डिटेक्टर पर आएगी. बट इन और केस द लाइट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड. सो देयर पर the light will never follow the straight line as I shown the diagram here that we have two persons. One is standing on the earth which is at rest but the other is moving in a car. and if ये कार वाला बंदा जो है ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंक के और वापस कैच करे तो इस गाड़ी वाले के बंदे के हिसाब से बॉल जो है वो जस्ट ऊपर वर्टिकल मूवमेंट करेगा. बट जो ये बाहर जो बंदा खड़ा है इसके हिसाब से जो है ये बॉल जो है वो इस तरह का मोशन करेगा क्योंकि वर्टिकल तो वो करेगा ही करेगा, इस बंदे ने उसको वो पहुंचे, लेकिन इस गाड़ी की वजह से जैसे ये गाड़ी मूव कर रहा है तो उस वजह से बॉल जो है ये भी इस तरह से मूव करके वापस आएगा. तो सेम इन द केस ऑफ लाइट, जब भी इस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करेगा तो उसके साथ ही वो इस तरह का एक शेप फॉलो करेगा. तो सोर्स से लाइट इमिट हो के जाएगा मिरर पर और मिरर से स्ट्राइक हो के वापस डिटेक्टर पर आएगा. एज आई शोन ऑन इस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड मिरर एंड डिटेक्टर इज L0. बट when the light is follow the projectile shape then the upper length will be L and the distance traveled by light is
S is equal to Vt, but we will consider the half, which is Vt divided by 2 and Vt divided by 2. Now, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is L square, which is that one, and L naught is the base, which is that one, and Vt divided by 2 is a perpendicular, which is that one. So as we know that S is equal to Vt, but here in this case S is equal to n and velocity is equal to speed of light because it's light. So L will become to 2L, as I taken here is a half length. So we will put it as a 2L is equal to Ct, and for L0 we will put it as a 2L0 is equal to T0 C. Now putting these value, we get that L0 is equal to T0 C divided by 2 and L is equal to T C divided by 2. Now putting these values in equation number 1 in this equation, so we get it as Tc divided by 2 square is equal to T0 C divided by 2 whole square plus Vt divided by C whole square. So now open this square, so we get T square C square divided by 4, T0 square C square divided by 4, V square T square divided by 4. Now multiplying both sides by 4, so we will cancel this 4 on both sides, so we get it as T square C square is equal to T0 square C square is equal to V square T square. सो नाउ हमको ये T जो है ये कॉमन करना है, तो इस वजह से हम V स्क्वायर T स्क्वायर को हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा, तो इससे हमें ये मिल जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे T जो है वो कॉमन ले लिया है, तो इस तरह से आएगा। फिर मैंने ये V जो है ये मैंने बाद में लिखी है और C को फर्स्ट में लेके आए, जस्ट अरेंज किया है। उसके बाद फिर मैंने ये जो है ये इस साइड पे लिखा और ये इस साइड पे लिखा है, जस्ट रीअरेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। फिर हमें T फाइंड करना है, तो इसलिए C स्क्वायर डिवाइड माइनस V स्क्वायर जो है ये हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, तो इसका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे जो है ये नीचे आ जाएगा। नाउ हमारे पास ये जो है ये C स्क्वायर है, इसको जब हम डिवाइड के नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद हम जो है इसके नीचे अलग से लिखेंगे और V के नीचे अलग से लिखेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट एज square root T square is equal to T0 square whole square root divided by 1 minus V square divided by C square whole square root, जिससे हमें आ जाएगा T square is equal to T0 divided by square root 1 minus V square divided by C square, and this is our final result। तो ये था आज का टॉपिक। अब इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंशाल्लाह जब भी ये एग्ज़ाम में आए तो आपने इस तरह ही लिखना है, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ही फुल मार्क्स मिलेंगे। ये है सेकंड पेज, आपने यूज़ करके जस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस फॉर्म में लिखे हैं। अक्सर इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल के लिए आप लिख लेना। और ट्विन पैराडॉक्स जो है वो इसी पर ही बेस्ड है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।